Hi, Mr. Khan. This is Faridoon from Bollywood Hangama. Here, sir. Arre वाह. How's it going? Very well, sir. Sir, incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look, now after this look, now I've got to get into another look, and is that journey is being very, it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So, as an actor, what do you देखिए think? नहीं, क्योंकि ये उठो जरा, मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको. क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो most of the shots in this film are real. The wrestling इसमें or MMA के there's no cable. Most of them is because of them. You know, there's a lot of contact happening in there. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. But then जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120, 130 किलो के fighters थे. And they're not our film fighters who will, you know, actually give you the leap and they will go down. They expect you to pick them up and throw them down. That was the most difficult part of it. Now, when a wrestler trains, he trains for an hour and a half to 3 hours. And शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. तो एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5 रीटेक. सो दैट्स 6 hours of, you know, in those lights and training that used to take a toll on the body. You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip. And don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.